Good morning, students of class 5. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, please take out your English grammar book, as I'll be continuing with Unit 14, Pronouns. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 71, Unit 15, Pronouns. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 71, as I'll be continuing with exercise 5 of Unit 15, Pronouns. Students, in my last video, I had finished till the 11th sentence of exercise 5, that is, underline the pronouns and tell their kinds. And students, today I'm going to continue with the 12th one. Students, before starting the 12th one, I would like to revise the 11 sentences of exercise 5, that is, underline the pronouns and tell their kinds. The first one, Samrit completes the homework himself. Himself is the pronoun. Please underline himself. And the kind of pronoun himself is reflexive pronoun. First one, himself is the pronoun. Underline the word himself, and it is reflexive pronoun. The second, it is a nice poem. Did you write it yourself? In this, yourself is the pronoun. Please underline this and write it as reflexive pronoun. In second one, students, it, you are also the pronouns, but they are personal pronouns. You should know, but we are not underlining and writing. But you should know that you and it are personal pronoun. The third one, that is a chocolate box. That, student, is demonstrative pronoun. Please underline that and write demonstrative pronoun. Why it is demonstrative pronoun? Because it is followed by a helping verb is. So please underline that and write demonstrative pronoun in the blank. Then the fourth one, this pen is mine. In this sentence, students, mine is the pronoun. And which kind of pronoun? Possessive pronoun. So please underline mine and write possessive pronoun. Then the fifth one, these are my friends. I play with them. In this, students, these. Underline the word these. These is demonstrative pronoun. Why it is demonstrative pronoun? Because it is followed by the helping verb are. In this sentence, students, my, I, them, these are also pronouns, but they are personal pronouns. You should know them, but we are not underlining and writing them. But you should know that these three are also pronouns. Then the sixth one, meet Radha, whose sister works at a school. In this sentence, please underline whose. This is the pronoun. And with pronoun, it is relative pronoun because it relates back to the noun Radha, which is used earlier in this sentence. Then the seventh one, Ilka said that she was sorry. In this, students, please underline that. Underline that, and it is relative pronoun because it again refers back to the noun used earlier in this sentence, that is Ilka. So that is relative pronoun. Now, eighth one, this is the dog that slept in our corridor. There are two pronouns in this. This, underline this, this is demonstrative pronoun followed by this, and that also because it is relating the noun dog which has been repeated earlier in the sentence. तो इसमें बेटा जो that है वो relative pronoun है और जो this है वो demonstrative pronoun है. Then the ninth one, we are over here. Can you see us? In this sentence, students, there are three personal pronouns. We, you, us. Underline them and write personal pronouns. Then the 10th one, is it the book that you wanted to read? Underline that, students, and that is relative pronoun. Underline that, that is relative pronoun. Then the 11th one, that coat is theirs. Please underline theirs. And theirs is possessive pronoun.
Please write possessive pronoun for there. Now students, the 12th one. The 12th sentence. Students solve these questions yourselves. Now, students, the 12 sentences, students solve these questions yourself. In this sentence, students, we have got these, but these here is not demonstrative pronoun because it is not followed by the helping verb. Rather, we have got questions after this. Questions is noun, not helping verb. So, these is not demonstrative pronoun, but the pronoun is yourself. And which kind of pronoun, students? Yourself? Reflexive pronoun. Yourselves is reflexive pronoun. Yourself is reflexive pronoun. Why reflexive pronoun, students? Because here the subject is the doer as well as the receiver of the action. In reflexive pronoun, the subject is the doer as well as the receiver of the action. So, students is the subject as well as the receiver of the action. So, yourself is reflexive pronoun. Fine. I hope all of you have done this. Now, so students, with this sentence we have finished exercise 5. Now I am going to erase this and write exercise 6. I am going to start with exercise 6. Exercise 6 is fill in the blanks with correct pronoun as indicated. Now, our 6th exercise, student, is fill in the blanks with correct pronoun as indicated. Now, the first one. Boys, 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 behave, dash. And we need to fill this with reflexive. We need to fill this with a reflexive pronoun. Now, students, here boys behave dash. Now boys, like if you are the speaker, you are addressing the boys. तो boys क्या है बेटा? Boys second person, ठीक है? Second person plural. So for second person plural, the reflexive pronoun. अब आपको ध्यान से देखना है कि second person यहाँ पे boys के लिए you हुआ. Second person
बॉयज के लिए हम क्या यूज करेंगे? यू, बिकॉज अगर आप स्पीकर हो एंड यू आर सेइंग बॉयज बिहेव डैश, तो आपको ये ध्यान में रखना है आपका सब्जेक्ट क्या है? बॉयज, जो सेकेंड पर्सन हो, और बॉयज के लिए हम क्या प्रोनाउन यूज करेंगे? यू. नाउ you need to refer back to the table given on page number 71 over here. सेकेंड पर्सन यू प्लूरल के लिए हम कौन सा बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करेंगे? क्योंकि यहाँ पे बॉयज प्लूरल है, हम यहाँ पे यूज करेंगे योरसेल्फ. सो बॉयज बिहेव योरसेल्फ. अगर एक बॉय होता बेटा तो हम यहाँ पे योरसेल्फ करते, बट बिकॉज यहाँ पे प्लूरल है तो हमने यहाँ पे योरसेल्फ किया. एंड यू नीड टू कीप इन माइंड कि आपका ये जो आप सब्जेक्ट है ये कौन सा पर्सन है? इज इट द फर्स्ट पर्सन, द सेकंड पर्सन और द थर्ड पर्सन? सब्जेक्ट के हिसाब से आप प्रोनाउन लोगे, एंड प्रोनाउन आपका जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है वो डिसाइड करेगा कि उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा. फाइन. इफ द सब्जेक्ट प्रोनाउन इज आई, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होगा. इफ द सब्जेक्ट प्रोनाउन इज यू सिंगुलर, दैट इज आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्फ होगा. इफ द सब्जेक्ट प्रोनाउन इज यू प्लूरल, तो आपका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्फ होगा. इफ द सब्जेक्ट प्रोनाउन इज शी, तो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हरसेल्फ होगा. इफ द सब्जेक्ट प्रोनाउन इज ही, तो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ होगा. इफ द सब्जेक्ट प्रोनाउन इज इट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इटसेल्फ होगा. इफ द सब्जेक्ट प्रोनाउन इज दे, तो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्फ होगा. एंड इफ द सब्जेक्ट प्रोनाउन इज अस, सॉरी वी, तो आपका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो आवरसेल्व्स होगा. सो फॉर दैट यू नीड टू लर्न दिस टेबल. तो फर्स्ट में आप क्या लिखोगे बेटा? योरसेल्फ. फाइन. उसके लिए आपको टेबल पता होना जरूरी है कि कौन सा सब्जेक्ट प्रोनाउन का कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा. सो आवर सेंटेंसेस, बॉयज बिहेव योरसेल्फ. Now, I hope all of you have done this, students. Now the second one. The second sentence is Ayush, comma, dash, have made a beautiful painting. Full stop. And we need to fill here with a subject pronoun. Now, अब बेटा यहाँ पे हमको क्या फिल करना है? इसमें एक सब्जेक्ट प्रोनाउन फिल करना है. फाइन. आयुष डैश हैव मेड अ ब्यूटिफुल पेंटिंग. नाउ अगर आप स्पीकर हो, आप फर्स्ट पर्सन है, आयुष से आप कह रहे हो आयुष डैश हैव मेड अ ब्यूटिफुल पेंटिंग, तो आयुष के लिए सेकेंड पर्सन के लिए हम कौन सा सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करेंगे बेटा? यू. आयुष, यू हैव मेड अ ब्यूटिफुल पेंटिंग, क्योंकि यू आर द स्पीकर एंड यू आर टॉकिंग टू आयुष. आयुष से आप बोल रहे हो, तो आयुष लिसनर है, तो वो सेकेंड पर्सन हुआ. तो आयुष के लिए हम कौन सा सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करेंगे बेटा? यू. आयुष, यू हैव मेड अ ब्यूटिफुल पेंटिंग. फाइन. तो यू क्या है आपका? सब्जेक्ट प्रोनाउन. एंड रिमेंबर बेटा, सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑलवेज कम्स बिफोर द वर्ब. फाइन. सो आयुष, यू हैव मेड अ ब्यूटिफुल पेंटिंग. यू इसका आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है ना. और यू हैव सेकेंड पर्सन सिंगुलर के साथ भी यूज करते हैं और प्लूरल के साथ भी यूज करते हैं. एंड यू रिमेन्स यू as subject pronoun and as object pronoun also. So I hope students you all have done the first and second sentence. The first one is boys behave yourself. Reflexive pronoun था, and reflexive pronoun कब use करते हैं? When the doer of the action is the receiver of the action also. Fine. Now the second one, Ayush, you have made a beautiful painting. या आयुष second person है, तो हम आयुष के लिए कौन सा सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करेंगे? यू. फाइन. So students, now I'm going to erase the first and second, and I'm going to write the
third sentence of exercise 6. Now, the third one. Dash are oak trees. Now we need to fill here a demonstrative pronoun. Fine. We need to fill here with a demonstrative pronoun. Now students, our third one is dash are oak trees. अब हमको यहाँ पे demonstrative pronoun use करना है. तो बेटा demonstrative pronoun के लिए there are 4 words. This, that, these, those. And we need to keep in mind कि demonstrative pronouns are always followed by a helping verb. अब बेटा if we look at the sentence, यहाँ पे are है. कौन सा helping verb है? are है. अब are हम किसके संग यूज कर सकते हैं? हम are either we can use with these or with those, है ना? हम these किसके लिए यूज करते हैं? For more than one thing close to us and those for more than one thing far away from us. Fine. अब dash are oak trees. This और that तो हम singular के साथ यूज करते हैं. वहाँ अगर यहाँ पे is होता तो हम this और that में से एक लेते हैं. बट यहाँ पे क्या है? आर है. आर हेल्पिंग वर्ब है. तो आर के लिए हम either we can write this और हम those, इन दोनों में से आप कोई भी एक लिखोगे तो वो हो जाएगा. If the oak trees are closer to you, you can write these. If they are far away from you, तो you can write those. But generally when we travel on the road, हम दूर से oak trees को देखते हैं. So आप इसमें these भी लिख सकते हो, those. दोनों में से कोई भी एक लिखोगे तो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा. So I am writing those. Those are oak trees. अगर आप these भी लिखोगे तो भी आपका जो सेंटेंस है वो करेक्ट होगा. बिकॉज आर के साथ हम प्लूरल लेते हैं. और आपको ये दिमाग में रखना है कि फॉर थिंग्स क्लोजर we use these and for things which are far away from us we use those. So you can use either one, both will be correct. If you write these are oak trees वो भी ठीक है. If you write those are oak trees वो भी ठीक है. Fine. But this or that आप नहीं लिख सकते हो. Why? Because उसके लिए helping verb is होगा. Fine. So I hope all of you have done the third one. Now the fourth one, children. I bought this ball. I bought this ball, so it belongs to dash. Now we need to fill this with an object pronoun. अब बेटा हमको यहाँ पे क्या बनना है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. आई यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन है. आई बॉट दिस बॉल, सो इट किसके लिए यूज किया है? यहाँ पे इट बॉल के लिए यूज किया है. और बिलोंग्स वर्ब है, और वर्ब के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. सो आई जब सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए हम सब्जेक्ट प्रोनाउन आई यूज करते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का जो आई सब्जेक्ट प्रोनाउन है वो उसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या हो जाता है? आई बॉट दिस बॉल सो इट बिलोंग्स टू मी. तो आई का सब्जेक्ट प्रोनाउन है एंड आई बिकम्स मी एज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या आएगा बेटा? मी. तो आवर सेंटेंस विल बी I bought this ball so it belongs to me. अगर आपने पेज नंबर 67 के वो टेबल याद किया होगा पर्सनल प्रोनाउंस का, so this is very easier for you to solve to fill in the
पर्सनल प्रोनाउंस, चाहे सब्जेक्ट प्रोनाउन हो, चाहे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो या पोजेसिव प्रोनाउन है, अगर आपको पेज नंबर 67 का वो टेबल लर्न है तो यू कैन इजीली सॉल्व द पर्सनल, यू कैन फिल द पर्सनल प्रोनाउंस. फाइन. सो आई सब्जेक्ट प्रोनाउन था, तो आई का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा बेटा? मी. मी इज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन सिंगुलर. नाउ आई एम गोइंग टू रिवाइज द थर्ड सेंटेंस. Those are oak trees. आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में these, those दोनों में से कोई भी एक इस ब्लैंक में फिल कर सकते होंगे, है ना? If the trees are closer to you, you'll write these. If the trees are far away from you, you'll write those. Fine. Now fourth one. I bought this ball, so it belongs to me. इसमें हमको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन फिल करना था, इसलिए हमने I का जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है बेटा? Me. Fine. So students, I hope all of you have done the third and fourth one. Now I am going to erase this and write the fifth one. She fell down and hurt dash. Now we need to fill here a reflexive pronoun. Now she fell down and hurt dash, reflexive pronoun. अब बेटा आपको वो पेज नंबर 71 में जो टेबल दिया हुआ है, अगर शी आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है, शी आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा बेटा? हरसेल्फ. और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम कब यूज करते हैं? व्हेन द सब्जेक्ट इज द डूअर एंड द रिसीवर ऑफ द एक्शन बोथ, है ना? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब हम यूज करते हैं? व्हेन द सब्जेक्ट इज द रिसीवर एंड डूअर of the action word. यहाँ पे she fell down and hurt herself, है ना? एक्शन भी सब्जेक्ट ने किया और एक्शन रिसीव ने सब्जेक्ट ने किया. तो जब सब्जेक्ट, रिसीवर और डूअर दोनों हो जाता है तो हम वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं. फाइन. तो she का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो क्या है बेटा? herself. You need to learn the table given on page number 71, है ना? In the purple box बेटा, कि जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है उसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो क्या होगा. सो ऑल ऑफ यू प्लीज राइट लर्न बाय हार्ट ओवर हियर सो दैट यू कैन लर्न द टेबल एंड सॉल्व द एक्सरसाइजेस इजीली. नाउ द सिक्स्थ वन चिल्ड्रन. दे live in that house this house is dash. We need to fill here the blank with a possessive pronoun. Fine. Now our sentences. They live in that house. This house is dash. अब बेटा यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है वो क्या है? दे. और दे हम किसके साथ यूज करते हैं? दे हम यूज करते हैं विथ थर्ड पर्सन प्लूरल, है ना? दे हम किसके साथ यूज करते हैं? विथ थर्ड पर्सन प्लूरल. दे सब्जेक्ट प्रोनाउन है. दे का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है बेटा? देम, है ना? सब्जेक्ट प्रोनाउन कम्स बिफोर द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कम्स आफ्टर द वर्ब. एंड दे का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन देम है, तो दे का जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो क्या होगा? दे सब्जेक्ट प्रोनाउन, देम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन एंड देयर्स क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन. तो दे का जो बेटा पोजेसिव प्रोनाउन है वो क्या होगा? देयर्स. THEIRS देयर्स. ये दे का पोजेसिव प्रोनाउन है. थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ दे यूज होता है और थर्ड पर्सन
Plural का subject pronoun they becomes them as the object pronoun and theirs is the possessive pronoun. So we will be filling in the blank with the possessive pronoun theirs. If you learn the table given on page number 67, आप आराम से इसको solve कर सकते हो. So students, now I'm going to revise the fifth and sixth sentence and I'm going to erase it. The fifth sentence, she fell down and hurt herself. Herself क्या है? Reflexive pronoun. She subject pronoun है and she subject pronoun का reflexive pronoun क्या है बेटा? Herself. Then the sixth one, they live in that house. This house is theirs. यहाँ पे हमको possessive pronoun भरना था. And their subject pronoun है, तो their subject pronoun का जो possessive pronoun है, third person plural का वो क्या है बेटा? Theirs. That is theirs. Theirs. I hope all of you have done. So now I'm going to erase, children, and write the seventh one. Now the seventh one. This is the girl dash studies in Now, we need to fill in the blank with the relative pronoun. Now, our sentences, this is the girl dash studies in my school. So, for girl, we will be using the relative pronoun students who. This is the girl who studies in my school. This is the girl who studies in my school. तो हमने यहाँ पे गर्ल के लिए कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया बेटा? Who. Who किसके लिए रिफर कर रहा है? For the noun girl which has been repeated in the sentence earlier. तो हमने this is the girl who studies in my school. I hope all of you have done. Now the eighth one. My handwriting is better than dash. We need to fill in the blank with a possessive pronoun. Now, the sentence is, my handwriting is better than dash possessive pronoun. Fine. अब यहाँ पे my है ना? My हम फर्स्ट पर्सन के लिए यूज करते हैं. अब ऑब्वियसली फर्स्ट पर्सन अपने लिए तो नहीं बोलेगा है ना? और my handwriting is better than है ना? कंपैरिजन हमेशा टू लोगों में होता है. तो फर्स्ट पर्सन किससे बोल रहा है? सेकंड पर्सन से. तो सेकंड पर्सन की हैंडराइटिंग के लिए हमको पोजेसिव प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के लिए हमको कौन सा पोजेसिव प्रोनाउन हम यूज करते हैं? योर्स. तो हम यहाँ पे क्या फिल इन द ब्लैंक करेंगे बेटा? माई हैंडराइटिंग इज बेटर देन yours. My handwriting is better than yours. So we will fill in the blank with the possessive pronoun yours. Fine. My handwriting is better than yours. We have filled the possessive pronoun with
हमने कौन सा possessive pronoun किया? yours. और yours किसके साथ यूज होता है बेटा? with second person. तो first person है ना, किससे कंपेयर कर रहा है? सेकेंड पर्सन से. तो माई हैंड राइटिंग इज बेटर देन योर्स. सो हमने यहाँ पे कौन सा पोजेसिव प्रोनाउन बेटा यूज किया है? योर्स. सो नाउ आई एम गोइंग टू रिवाइज द सेवेंथ वन. दिस इज द गर्ल हु स्टडीज इन माई स्कूल. हु क्या है बेटा? रिलेटिव प्रोनाउन. और हु किसके लिए यूज हुआ है? फॉर द नाउन गर्ल. देन द एट्थ वन, माई हैंड राइटिंग इज बेटर देन योर्स. और बेटा योर्स क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन जो सेकेंड पर्सन के लिए यूज किया जाता है. सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी हैव डन द 8 fill in the blanks of exercise 6 and the remaining 8 will be doing it in our next video. That's all for today, children. Thank you, students. Have a good day ahead.